हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था हम लोगों ने। ठीक है, अब आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस किया था उसमें आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना था। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही किया था ना, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाल रहे थे, मतलब कॉज दिया हुआ था, इफेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ वैसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं दिया रहेगा। यू वॉन्ट बी गिवन द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं दिया रहेगा। उसके बदले आपको कुछ बाउंड्री कंडीशन दिया रहेगा कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल ये है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल ये है, ऐसे कुछ बाउंड्री कंडीशन आपको दिया रहेगा। यू विल बी गिवन सम बाउंड्री कंडीशन, और उस बाउंड्री कंडीशन को यूज करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। समझ आ रहा है आपको? पहले जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था और वहाँ पे आप गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्ब्स लॉ वगैरह यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकाल रहे थे। अब हम लोग को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं दिया रहेगा, उसके बजाय हम लोग को कुछ बाउंड्री कंडीशन दिए रहेंगे। बाउंड्री कंडीशन का मतलब यू विल बी गिवन पोटेंशियल एट सम पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, and making use of that you have to find out the electric field distribution and the potential distribution। ठीक है, तो ब्रॉडली ये इस चैप्टर में हम लोग का कहानी रहेगा। we will be given boundary condition, and based on the boundary condition and of course you will be given some or may not be given the partial description of the charge distribution का डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत दिया जा सकता है या वो भी नहीं दिया जा सकता, ऐसा भी हो सकता है, बट आपको सफिशिएंट अमाउंट और सफिशिएंट नंबर ऑफ बाउंड्री कंडीशन दिया रहेगा और उसको यूज करके आपको पोटेंशियल एंड फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो ये हम लोग का आज का चैप्टर है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कैसे इस सिनेरियो को हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, यू हैव रेड अबाउट द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? गॉस लॉ, मैंने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही बताया होगा, बट चलो फिर भी मैं एक बार फिर से आपको शुरू से बताता हूँ। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेज दैट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत डिटेल में हम लोगों ने किया है, इसको पूरा प्रॉपर हमने सॉलिड एंगल से डिराइव भी करवाया था आपको। इट सेज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड across any closed Gaussian surface, the flux of electric field across any closed Gaussian surface is equal to the net charge enclosed by that Gaussian surface upon permittivity of free space. This is the Gauss law of electrostatics। ठीक है, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। Let's convert into differential form। हम लोग if I make use of the Gauss divergence theorem, which says that E dot NDS is equal to, you know Gauss divergence theorem, if I given a surface, a closed surface, I suppose V is the volume enclosed, then the Gauss divergence theorem says that F dot NDS, F is a vector function of position, and F has got continuous, F is continuous at each and every time, each and every point inside the space which is enclosed by V, and its partial derivatives are also continuous at each and every point in the region enclosed by S। फिर से बोलता हूँ, if F is a vector function of position, F should not be vector function of the velocity, it should be a vector function of position x, y, z, it should not be a function of x dot, y dot, z dot। ठीक है, so if F is a vector function of position and is continuous and has got continuous first partial derivative at each and every point inside V enclosed by S, then the surface integral of F across that S closed surface is equal to
This is Gauss divergence theorem. So I am making use of Gauss divergence theorem over here. And Q is what? If suppose rho is the volume density, then Q can be written as rho d tau. Rho d tau. V is the volume enclosed by S. V is the volume enclosed by S. ठीक है? Okay. Okay. So epsilon naught is constant, so it is happy inside as outside. कहीं भी रख लो, बाहर कर लो, अंदर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको इंटीग्रल से, क्योंकि ये कांस्टेंट है. So I can say that minus, I can take epsilon naught inside, no issue, happy everywhere. These are the constant, सब constant होते हैं, कहीं भी खुश रहते हैं ये लोग. अब I'll just put everything inside, minus now this integral is 0 for volume enclosed by any arbitrary closed surface. The integral is 0. ये सब मैंने करवाया भी होगा, बट चलो फिर हमको ध्यान नहीं है कि करवाया होगा ऐसे. गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ में करवाते हैं. द इंटीग्रल इज 0 फॉर, दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल, राइट, is 0 for volume enclosed by any arbitrary closed surface. Is the integral is 0 for volume enclosed by any arbitrary closed surface. So the integrand has to be 0. The integrand has to be 0. जैसे आप डिफरेंट इंटीग्रल में करते हो ना, कि मान लो ये डिफरेंट इंटीग्रल है, 0 है. This different integral is 0. That does not mean f is 0. But if I say this different integral is 0 for any value of a and b, if I say that different integral is 0 for any value of a and b, that means f has to be 0. तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे different integral में your domain of integration is part of x axis lying between x equal to a to x equal to b, right? Here the domain of this different integral is the part of x axis from x equal to a to x equal to b. यहाँ पे volume integral है, so here the domain of integration is the volume enclosed by s. तो चूंकि ये किसी भी वॉल्यूम के लिए 0 हो रहा है, अगर ये इंटीग्रल it is 0 for volume enclosed by any arbitrary closed surface, so that can happen only when your integrand is 0. That can happen only when your integrand is 0, means this integrand has to be 0. This integrand has to be 0, right? So this integrand so this integrand has to be 0. That means minus, sorry, and this is Gauss law of electrostatics in differential form. ये Gauss law of electrostatics differential form में है. So in differential form, the Gauss law of electrostatics looks like this. Fairly simple. This is Gauss law of electrostatics in differential form. ठीक, फिर से एक बार लिख लें. यहाँ पे हम लोग को गॉस लॉ ऑफ इंटीग्रल फॉर्म में हम लोग पढ़ा है. गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटीग्रल फॉर्म
looks like this, and it reduces to differential form, and differential form looks fairly simple. ठीक है, इंटीग्रल इज इंटरवल कॉन्सेप्ट. इंटीग्रल जो है पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है, इट इज डिफाइंड ओवर इंटरवल. सरफेस इंटीग्रल over the surface, Gaussian surface, it's already defined over something, over a curve, over a volume, over a surface, over a part of x-axis, right? So it's already defined over an interval, right? Whereas differential form is defined at a point. Divergence of E at any point P in electrostatic system is equal to the volume density of charge at that point P upon epsilon naught. इसको कई बार लोग point form भी बोलते हैं. We also call it point form. The divergence of heat at any point P in the electrostatic system is equal to the volume density of charge at the same point P upon epsilon naught. This is defined. It's a point form. It's point form. मतलब हर point पे ये true रहेगा. You take an electrostatic system, this is going to be valid at each and every point in the electrostatic system. ठीक है, ये सब laws of nature है. Nature has made these laws. Nature made the whole electromagnetic system, and to govern the physical process happening in that electrostatic system, nature formulated laws, and those laws are in the form Maxwell equation, and this is the first Maxwell equation. ठीक है, नेचर ने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम बनाया, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के अंदर जो भी फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी फेनोमेना हो रहा है, उस फेनोमेना को गवर्न करने के लिए इट मेड सेट ऑफ 4 लॉज अलॉन्ग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस व्हिच वी कॉल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. वी विल सी लेटर ऑन. ठीक है, तो ये इन लॉज को बना के, और इनफैक्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फ्लोज फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशन इटसेल्फ. बाद में मैक्सवेल incorporated the law of conservation of charge and converted Ampere's law into the fourth Maxwell or third Maxwell equation, whatever you may say. So this is the first Maxwell equation, the Gos law of electrostatics in Gos law of electrostatics in differential form, right? Now, this is true. This is true in general for electromagnetic system. This is true in general for electromagnetic system. ठीक है, in generally electromagnetic system के लिए true है. But if I confine myself to an electrostatic system, electrostatic system is a special kind of electromagnetic system. Electromagnetic system is a general kind of big system, right? Now, what I am doing is, now I am not interested in general electromagnetic system as a whole. I am just interested in those electrostatic systems where the charges are at rest. I am interested in those electrostatic system, those electromagnetic system where the charges are at rest. हम लोग एक special kind of electromagnetic system interested है जहाँ charges rest पे होते हैं, और उसको हम लोग electrostatic system बोलते हैं. And we have already seen that for electrostatic system, the electric field, which is called electrostatic field, for electrostatic system, the electric field is conservative. The electric field is conservative, or you can say the electric field for electrostatic system is conservative. You can simply say the electrostatic field is conservative. Electric field is conservative, and conservative means okay, conservative का तो ऐसे I don't remember whether I taught or not. Conservative field are configuration dependent fields, the field which depends on the configuration of charges, right? Mechanics में जरूर पढ़ाया होगा. For conservative field, the curl of E is 0, and since the curl of E is 0, it is irrotational field, so E can be expressed as gradient of scalar, that a scalar is called electrostatic potential, where
V is electrostatic potential. Where V is electrostatic potential, right? V is electrostatic potential. Now, if I put it, since I am interested in electrostatic system, so if I put this property of electrostatic system over here, if I incorporate this property, since I am only interested in electrostatic system, so for electrostatic system, E is expressed as the gradient of scalar. So if I put it there, we have what? Del dot E, and E is expressed as gradient of scalar, that is electrostatic potential. So it comes out to be what? Divergence of gradient is Laplacian, और माइनस को दूसरे साइड लेके चला जाए. This is called Poisson equation. नाम भी विदेशी लोग का अजीब अजीब होता है. पॉइजन स्पेलिंग अलग है ऐसे इसका. बहुत लोग पॉजो बोलता है, कुछ भी मतलब लिखना सही होना चाहिए, स्पेलिंग गलत नहीं. Poisson equation that says this operator is called Laplacian operator. Del square, अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करेंगे, is defined like this. So it says Laplacian of potential at any point in electrostatic system is equal to the negative of the volume density of charge at the point P. Derivative हमेशा point पे define होता है. तो Laplacian of V at any point P in the electrostatic system is equal to rho at that point P upon epsilon naught with minus sign. This is called Poisson equation. If I am applying this Poisson equation in a region, if I apply this Poisson equation in a region where you don't have static charges, you don't have the charges, in that case this rho will go to 0. If the region of our interest मतलब हम लोग को पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रीजन में निकालना है जहाँ पे चार्जेस नहीं है, चार्जेस कहीं और होंगे, ठीक है. हम लोग को जिस रीजन में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है उस रीजन में कोई स्टैटिक चार्ज नहीं है. इन दैट केस आई कैन make this rho 0. If a region of our interest has no static charge, no static charges, then in that case del square V is going to be 0. Del square V is going to be 0, and this is called Laplace equation. This is called Laplace equation. It's called Laplace equation. Poisson equation, Laplace equation. ठीक है? Okay, getting your point? और इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. बड़ा हो जाता है तो उसमें अपलोड नहीं होता यार. वो जो मेरा ऐप है ना, 5 GB से ज़्यादा का वीडियो अपलोड नहीं होता. ठीक है, अच्छा भी है. आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम का वीडियो रहा जाए, ठीक रहे, है ना. उतना ही अटेंशन भी रहता है बच्चा लोग का, उसका रेस्ट मांगता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, ओके.